सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जिनोम वैली क्लस्टर में अपने मौजूदा रिसर्च कैंपस की तोसी का ऐलान किया। कंपनी तोसीशुदा कैंपस की तरक्की के लिए 788 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और अगले 5 सालों में इस तोसी के साथ 1000 मुलाजिमतें पैदा करने का वो मंसूबा रखती है। संग बुनियाद रखने की तकरीब में वज़ीर सनअत के रामाराव, सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार, महकमे सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर केटीआर ने प्रोटैक लेबोरेटरी के जदीद तरीन इस लेबोरेटरी का भी इफ्तिताह किया, जो कैंसर की तरह बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन के बारे में अहम तहकीकात करती है। Today, we celebrate growth of not just of a company, but also the growth of an entire cluster and the overall ecosystem. This investment is not just about brick and mortar. It represents the belief and confidence that Syngene has in the potential of Hyderabad as a hub for cutting-edge research and development in life sciences sector. I'm particularly thrilled to learn about the journey of Syngene's R&D center in Genome Valley in Hyderabad. From its modest beginnings in 2020, with a 52,000 square foot facility and 100 scientists, it has now grown 4 times to an impressive 2 lakh square feet and houses more than 900 scientists. This is a testament to the dedication and expertise, and more importantly, to the availability of wonderful talent here in Hyderabad. Furthermore, I'm delighted to inaugurate the ProTax lab of the compound management facility of the company. I believe that the ProTax lab, with its dedicated team of 150 specialized scientists and analysts, is at the forefront of innovative targeted protein degradation technology, especially in cancer treatment. Also, I note that the CMF is a unique facility that centralizes the storage of synthesized compounds, thereby streamlining the company's research activity and efforts. I'm also given to understand that Syngene's scientists in Hyderabad